अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, we'll discuss question number 2. Philosophical foundations की ज़रूरत क्यों महसूस की गई एजुकेशन में? A philosophy grounds or guides practice in the study of existence and knowledge, while developing an ontology, the study of being, on what it means for some things or someone to be or exist. While accidental metaphysical traditions are grounded in the tradition of the ancient Greeks and the philosophies of Plato and Aristotle, basically any philosophers ने इसकी बुनियाद रखी, Aristotle and Plato etc. Philosophical traditions from the 9th century helped ground the early foundations of educational philosophy and the development of public education in Europe and United States. Historical need for studying philosophical foundations of education. अब हम इसको historical ज़रूरत पड़ेंगे. Historically, need for studying, exploring the historical foundations of curriculum can promote a sense of freedom and encourage educational reforms. इसने educational reforms को encourage किया और historically हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है. Society is a dynamic with the changing popularity of a particular philosophy. सोसाइटी एकदम से वजूद में नहीं आई, बल्कि पहले इंसानों ने एक दूसरे के साथ रहना, फिर पहले लोग बर्दाश्त ही नहीं करते, एक दूसरे को बुलाते थे, कत्ल कर देते थे, मार देते थे. बहुत सारी इसकी हिस्ट्रीज मौजूद हैं. फिर इंसान ने सोशलाइज़ करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पर एतबार करना शुरू किया, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना शुरू किया. पार्टिकुलर फिलासफी मिररिंग फैक्टर्स सच एज environmental and economical needs, war or peacetime, time recession or the time abundance, changing technology and so on. और इस माशरती बदलाव में और इस फिलासफिकल चेंजेस में बहुत सारे दौर गुजरे, बहुत सारी चेंजेस आई और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ नई उभरी, बहुत सारी बहाल हुई, जिसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे रवैये बहाल हुए, जिनकी वजह से इसको समझने में आसानी हुई. एग्जाम्पल इसके हम चेक कर लेते हैं. इफ़ अ नेशन इज़ अ वॉर, ग्रेटर एम्फोसिस विल बी प्लेस्ड ऑन सेक्रीफाइसिंग फॉर द ग्रेटर गुड, moralistic principles and adhering to group norms. Psychologically need for studying philosophical foundations of education. The psychological foundation of curriculum and instruction has continued to expand, especially with exponential growth in neuroscience research. Future psychological research may yield information. Next is guiding philosophy. By adopting a guiding philosophy, one does not become married to a particular psychological or sociological foundation of the thought, which history reminds us is ever changing, and one can instead remain fluid in how one's philosophically based goals are met. Existing educators who complete studies in this field may choose to continue teaching while taking on administrative duties. K-12 principals were predicted to experience a much slower increase in available jobs over years. सालों तक जितनी available jobs होती हैं उसको predict करते हैं. Next is question number 3. Write the nature of idealism. Idealism की nature लिखें as main philosophy thought के तौर पर. Idealism and philosophy. In philosophy, idealism is a diverse group of metaphysical views which all asserts that reality is in some way indistinguishable or inseparable from human perception or understanding, that it is in some sense mentally constituted, or that it is otherwise closely connected to ideas, thereby bringing about the existence of objects independently of human minds. Early modern period. इब्तदाई मॉडर्न पीरियड हम डिस्कस करते हैं. इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, George Berkeley was often considered the paradigmatic idealist, as asserted that the essence of object is to be perceived. However, it is much different from the more traditional idealism of Berkeley as compared to Kant's views. Next is nature of idealism. Idealism as a form of metaphysical monism holds that consciousness, not matter, is the ground of all being,
Anaxagoras 480 BC. Before Christ taught that all things were created by news. सब कुछ ज़हनी तख्लीक है. Idealism as main philosophical thought. Idealism in philosophy, any view that stresses the control role of the ideal or the spiritual in the interpretation of experienced. Negative and positive side of idealism. Idealism के हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स चेक करेंगे. हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं. This process, as its high levels, manifested itself as creativity, mind, and selves or persons. Man, as a part of the cosmos, expresses its inner structure in his own life. Now, question number 4. Which cognitive teaching strategies a teacher can use for cognitive development and better results of the students? Cognitive abilities का ताल्लुक इंसान की सोच से होता है, जहानत से होता है, लॉजिकल रीजनिंग से होता है. एक टीचर कौन सी कॉग्निटिव टीचिंग टेक्नोलॉजीज स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकता है ताकि स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके? Now the answer is cognitive strategies are useful tools in assisting students with learning problems. Students को जितने issues face करने पड़ते हैं लर्निंग प्रोसेस में, उन सब को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ बेस्ट रहती हैं. जितना स्टूडेंट सोचते हैं, जितना उनके मुतालिक सर्च करते हैं, जितना थॉट प्रोवोकिंग जितनी स्ट्रेटजीज होती हैं वो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और इन्हेंस करती हैं और स्टूडेंट्स बेहतर से बेहतर आइडियाज़ सोच सकते हैं, बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. क्योंकि जितना वो ज़्यादा सोचेंगे उतनी उनके माइंड में ज़्यादा ट्रिक्स, ज़्यादा स्ट्रेटजीज, ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे. Cognitive strategies provide a structure for learning when a task cannot be completed through a series of steps. ये स्टूडेंट्स उस वक्त सोचते हैं जब वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस टास्क को फिनिश नहीं कर पाते, तो उनकी कॉग्निटिव लर्निंग बेहतर होती है. यूज़ फॉर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज. कंटेंट एनहांसमेंट impacting both the task and the learning using cognitive strategies is referred to as content enhancement. Content को बढ़ाया जा सकता है. In addition, case studies will be presented to show cognitive strategies in action. Now this is question number 5. Describe the relationship between economic condition and education. इकोनॉमिक कंडीशन और एजुकेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है. प्रोफेशनल होने के लिए कोई स्किल या एजुकेशन होना ज़रूरी है. और जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितनी अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स होंगी किसी भी इंसान के पास, तो वो प्रैक्टिकल फील्ड में उतना अच्छा कमा सकता है, उतना अच्छा ग्रो कर सकता है, अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकता है, सेल आउट कर सकता है. तो बेसिकली आजकल मॉडर्न सोसाइटीज़ में और मॉडर्न कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को, बच्चों को ट्रेन इसलिए किया जाता है टू अर्न मनी, कि वो पैसा कमा सकें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इजी लाइफ गुजार सकें, और जो उनकी पढ़ाई का मकसद है वो भी आगे यूज़ हो सके. क्योंकि जितना कमाएंगे उतनी इनोवेशन बेहतर होगी, इतनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होंगी, इतना लोगों में एक शऊर पैदा होगा, एक सोच पैदा होगी, और उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे टू ग्रो मोर, टू प्रोड्यूस मोर. इकोनॉमिक कंडीशन और एजुकेशन, बेसिकली अगर इकोनॉमिक कंडीशन भी रिलेट करती है एजुकेशन से, जितनी किसी स्टूडेंट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी उसकी एजुकेशन प्रोग्रेस भी इतनी अच्छी होगी, क्योंकि वो मेंटली रिलैक्स होगा. और जितनी डाउन होगी तो आगे डाउन होगी, और आगे पढ़ने के बाद भी यही इम्पैक्ट होता है. जितनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी उतना उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, वो नई इनोवेशंस की तरफ जाएंगे. और जितने वो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर फंसे रहेंगे स्टूडेंट, इतनी वो कुछ भी नहीं, वो इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते सोसाइटी के लिए. It is well established that improvements in education are associated with long-term improvements in economic performance. अगर हम एजुकेशन के सेटअप को बेहतर करने सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में और इकोनॉमिक कंडीशंस में बेहतरी लानी पड़ेगी. देयर आर 3 ब्रॉड थ्योरीज. 3 ब्रॉड थ्योरीज पेश की गई हैं. द बेसिक ह्यूमन कैपिटल अप्रोच इज़ दैट एजुकेशन इम्प्रूव्स द ओवरऑल स्किल, एज वी हैव डिस्कस्ड.
कि एजुकेशन इम्प्रूव्स द ओवरऑल स्किल्स। एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, इवन एक एजुकेटेड लेबर ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ब्रिटेन और यूएसए में एक मज़दूर एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट देता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। Economic analysis shows that on the whole, improvement in school level education leads to improvement in economic performance and more so than the other way around. जितनी उसकी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन बेहतर होगी, इतनी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। रीजंस टू फाइंड, इतने उसका बिहेवियर बेहतर होगा। ओवरऑल सोशली भी, मॉरली भी वो सोसाइटी के लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा। रीजंस टू फाइंड रिलेशन between education and economic conditions. There are two very basic reasons for expecting to find some relation between education and economic growth. Number one is the most general level. It is instinctively reasonable that living standards have raised so much over the last years because of education being at a more precise level. A broad range of econometric studies point out that the income individuals can grasp depends their level of education. डिपेंड करता है जितना उनका लेवल ऑफ एजुकेशन बेहतर होगा इतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। इम्प्रूव इकॉनमी थ्रू एजुकेशन, हम एजुकेशन के थ्रू इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। इट इज़ likely that countries with high level of education will also have high capital per worker. Again, per worker individually more capital gain कर सकते हैं than the low educated worker. Thank you so much. This is the end of the assignment, and subscribe and watch more for like this. And if you want to discuss any more topics, you may discuss in comment section. Thank you.